Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shreya. I cleared NEET in my first attempt and I am currently a second year MBBS student at Government Medical College Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I'll know you like my videos and it will motivate me to make even more for you. So today's video is going to be about the 20 things that I've learned in 20 years. Before I get into this video, I really want to make one point clear that these are my views and these are based on the kind of experiences that I have had. I'm not here to impose anything on anyone. This is what you should believe in and this is how things are and this is how things actually work. And I hope that no one takes offense to any of these points. Okay, before I start this video, there's one more thing that I want to mention, that we are now a family of 5k subscribers on YouTube. And I cannot tell you how much that means to me. I'm so grateful for all those people who've believed in me, who were watching my videos since the starting and who've just always given a very positive feedback. It is something that keeps motivating me. मेरे को पता है मतलब कि मैंने कितना सोचा था about starting this YouTube channel also, and मतलब it was just a leap of faith I had to take. Okay, ठीक है, you can do it, let's just do this. And मैंने सोचा नहीं था, honestly मैंने नहीं सोचा था कि there will be people who will support me this much, and I have a very positive audience and a very supportive audience as well. I'm so grateful for all of you, and I just wanted to say thank you for sticking by my side. So without any further ado, let's get into the video. The point is work on your hobby. मैंने चीज़ realize किया कि as you grow up especially, तो I'm saying this as a medical student, so you're bombarded with a lot of duties and you're always burdened with a lot of work. So I feel in situations it is very important to have that one hobby that you can go to when you're feeling tired and when you just need a break. So मेरे हिसाब से तो you should just work on them, you should not leave them कि अच्छा हाँ करते थे पहले डांस, कभी करते थे पहले सिंगिंग, कभी अब छूट गई, अब तो है ही नहीं टाइम. I just think कि तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है for things that are important to you or the things that make you happy. तो मैंने ये चीज़ सीखी है विद टाइम, क्योंकि मैंने भी बीच में छोड़ दिया था for like even during NEET and even after NEET when college started. Initially काफ़ी hectic हो गया था, तो I was not in touch with my hobbies at all. मैंने बिल्कुल I used to dance, I sing, I paint, I used to play badminton, I used to play table tennis. तो ये सारी चीज़ें ना मेरी छूट गई थी. बट जैसे जैसे मेरे कॉलेज फेस्ट आया एंड फिर बीच में हम थोड़े फ्री हुए, तो मैं आई स्टार्टेड डांसिंग अगेन, आई स्टार्टेड सिंगिंग अगेन. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव दैट वन हॉबी और दैट वन थिंग दैट यू कैन डू इन योर फ्री टाइम दैट जस्ट टेक्स ऑफ दैट स्ट्रेस from you. So I think that's very important. So and don't be afraid to show it to the world. Go get on that stage, pick that mic up and just sing or dance and perform. You're going to love it. Second thing is, you won't always be the most liked person in a room and that's completely fine. ये चीज़ मेरे जैसे पर्सन ने बहुत लेट सीखी है, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज पीपल प्लीजर. मेरे को बस लगता था कि अगर मैं किसी रूम में खड़ी हूँ या फिर इफ आई एम सराउंडेड बाय पीपल, all of them should like me. I'm going to be very sweet, I'm going to be very nice to them, they'll all like me, they'll all be a very good friend. एंड बचपन में चाहे हो भी जाता था शायद थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है, तुम 3-4 बच्चों में खड़े हो, यू बीइंग वेरी नाइस टू देम, तुम उनके लिए चॉकलेट्स ला रहे हो, स्वीट्स ला रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो दे यूज्ड टू लाइक यू कि अच्छा हाँ ये बंदी अच्छी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. बट एज यू ग्रो अप you realize that is just not how things work, that is just not how things are. You cannot be the most liked person in the room and that's completely fine. Not everyone can like you and you don't have to keep making an effort to make that happen. People who are meant to be in your life and people who are actually going to be there for you and care for you will like you either ways. So you ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अच्छा हाँ मतलब कि तुम you know beating yourself up कि अच्छा कैसे होगा कि how does that person not like me. Some people just don't like you, it's okay. So I think it's okay to not be the smartest, funniest or the most talented person. Third point is, it is completely okay if you don't fit in. You don't have to like something just because everyone else does. तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है, हमें कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर मूवी, कोई पर्टिकुलर सीरीज इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हमें नहीं पसंद, तो वी आर गोइंग टू से कि अच्छा हाँ आई लाइक इट एंड मेक आवरसेल्व्स लाइक इट जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स डज एंड दैट्स व्हेयर वी कैन फिट इन. तो आई हैव रियलाइज दिस कि नहीं इम्पॉर्टेंट कि तुम हमेशा फिट इन करो. समटाइम्स यू नीड टू स्टैंड अलोन टू स्टैंड अपार्ट. तो इट्स ओके, मतलब जस्ट यू डोंट हैव टू चेंज योर ओपिनियंस about a certain thing or your interests just because everyone else has those interests. So it is fine. I think you should be proud of your opinions and interests even if they don't match with today's worldview. Fourth thing is, prioritize self-love. ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा लेट सीखी है and अभी भी this is something that I will say that I struggle with, कि sometimes when certain things happen or sometimes when people treat you a certain way, it is very hard
टू कीप लविंग योर सेल्फ, एंड आई नो कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ कितनी नीचे जाती है. तो उन मोमेंट्स में यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ. यू थिंक कि अच्छा मे बी देयर वाज सम प्रॉब्लम इन मी, और मे बी आई वाज नॉट अ गुड फ्रेंड, आई वाज नॉट देयर, एंड सारे टाइप के नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं. तो इट इज़ मतलब आई थिंक कि यू कांट love or care about anyone else unless you love yourself. So I just feel you should, you know, do that skincare routine, go to that gym, click hundreds of pictures of yourselves, make your own, you know, ऐसे featured reels, and मतलब जो करना है करो. It's just treat yourself, go buy yourself a gift, buy yourself flowers. तो करो यार. मतलब मेरे को बस ये लगता है कि end of the day you are the person who's going to be there for you, despite of मतलब जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे हो, इवन इफ योर फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू एंड योर थॉट्स, एंड इट्स यू पुलिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट होल. तो कोई और नहीं होने वाला, इट्स जस्ट यू. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें अपने आप से प्यार हो पहले, बिफोर यू आर रेडी टू गिव दैट लव टू एवरीवन एल्स. फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव गॉट टू फेक इट टिल यू मेक इट. एंड ये चीज़ तो something that I call is my life motto, कि कभी कभी you have to put on that shield and you have to pretend that you have the hang of it or that you've got it, and eventually you end up getting where you always wanted to be. And कभी कभी you have to show it to the world कि अच्छा I am tough and I have got this shit, even if behind that shield you're very scared and you have no idea about what you're doing, but करना पड़ता है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डू कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू फेक इट टिल आई मेक इट, इवन इफ आई एम नॉट श्योर, इवन इफ आई हैव नो क्लू अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, द वर्ल्ड विल थिंक कि आई हैव completely got this, and eventually I end up getting it and I end up making it. So that is something that I really believe in. It is actually literally my life motto. Okay, sixth point is you can't be productive all the time, and ये मेरे से over hyper and परफेक्शनिस्ट पर्सन ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से सीखा है. कि मेरे को लगता था कि अच्छा हाँ, अगर मेरे पास 3 hours फ्री है तो इधर आई शुड बी स्टडिंग, और आई शुड बी रीडिंग अ बुक, और आई शुड बी डांसिंग, और आई शुड बी सिंगिंग, आई शुड बी डूइंग समथिंग. मैंने कुछ ना कुछ करना ही करना है, रूम क्लीन कर दिया, कुछ भी कर दिया. बट ये सब करते करते मैं इतना ज़्यादा ओवरवर्क हो गई थी, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, एंड तो डिसअपॉइंट हो जाती एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ चलो मैंने इतना सोचा था कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं हो पाता था. तो एंड दैट्स फाइन. आई हैव रियलाइज कि गिविंग योर सेल्फ अ ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ब्रेक्स लेके ही मतलब व्हेन यू टेक दैट ब्रेक यू रियलाइज कि इसके बाद व्हेन यू वर्क ना, इट इज द एफिशिएंसी इज मच हायर देन इट वुड हैव बीन हैड यू बीन कंटिन्यूसली डूइंग दैट वर्क. तो मैंने तो ये चीज़ सीखी है कि बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना एंड वो छोटी छोटी स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तुम पूरा टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. सेवेंथ पॉइंट इज everything does happen for a reason. I know ये बहुत क्लीशे लाइन है, सबने सुनी होगी कि अच्छा हाँ ट्रस्ट द यूनिवर्स, गो विद द फ्लो, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल फाइंड इट्स वे टू यू, ये वो. तो आई नो ये सुनने में क्लीशे बहुत लगता है. मेरे को लगता था कि अच्छा तो सभी बोलते हैं, हर एक इंस्टाग्राम रील, हर एक यूट्यूब शॉर्ट, हर एक पोस्ट, हर जगह ये चीज़ होती है कि अच्छा हाँ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ट्रस्ट द यूनिवर्स. सुनने में चीज़ अच्छी लगती है, क्लीशे भी लगती है, बट when you experience it, when you go through a certain time and when you think अच्छा why is this happening with me, मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, why am I always the person who's getting hurt, ये वो तुम सब सोचते हो. But once you go through that dark phase and when you look back, when you finally reach a point where you're happy and then you look back, you can realize exactly why everything that happened had to happen. एंड बोलने में लगेगा सबको कि अच्छा ये तो सब बोलते हैं, बट जब तक तुम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते ना तुम्हें पता नहीं लगता कि व्हाट दैट सेंटेंस और व्हाट दोज लाइन्स इन दोज पोस्ट एक्चुअली मीन. यू कैन फील इट कि अच्छा हाँ वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ यार आई हैव स्टार्टेड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई नो व्हाट हैज गॉट माई बैक, एंड जो भी हो रहा है ठीक है, इट माइट फील अनफेयर एट दिस मोमेंट बट इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. ओके, सो 8th पॉइंट इज शो ग्रैटिट्यूड. एज सिंपल एज इट साउंड्स, बहुत लोग कई बार नहीं बोलते थैंक यू, कई बार लोग नहीं करते अप्रिशिएट, नॉट बिकॉज दे डोंट मीन टू, बट कई बार हाँ रह जाता है बोलना. बट आई हैव लर्न दिस कि कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है ना, डोंट बी अफ्रेड और डोंट हेजिटेट टू एवर टेल देम हाउ मच इट मीन्स टू यू. चाहे मतलब कई बार ना लोग सोचते हैं कि अच्छा हम इतना बोलेंगे थैंक यू, इतना हम शो करेंगे, बंदे को ये ना लगे कि शुगर कोट करके बोल रहे हैं तो ऐसे वैसे ये वो, नहीं इतना मत सोचो. जस्ट से थैंक यू, जस्ट से दैट यू वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव डन, शो इट, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हारा एक थैंक यू is making someone's day. Okay, so 9th point is actually one of my favorite Taylor Swift song lyric, and it is very simple. Haters gonna hate. तुम जितना भी try कर लो to be nice to someone or to make an efforts to make someone like you or be your friend, you
are going to be the baddest person or the villain in their story. You can't do anything about it. People who don't like you, जितना मर्जी तुम ट्राई कर लो, nothing can change that. अगर तुम्हारा उनका कई बार बन गया तुम्हारे बारे में पर्सपेक्टिव फॉर whatever XYZ reason, they are going to hate you anyways. तो ठीक है, let them do their thing and you just do your thing. 10th point is no response is also a response, and there's nothing else that I want to say about this. Coming to the 11th point, good things take time. I know कई बार बहुत impossible लगता है कि ये हमने if we've dreamt this dream, is it ever going to come true? Or if we've thought about this kind of future, are we ever going to get to that point? And ये चीज़ मेरे साथ नीट के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी, and I know मेरी majority ऑडियंस नीड एस्पिरेंसी है, एंड आई नो कि काफ़ी लोगों को लगता होगा अभी भी कि पता नहीं क्या होएगा, कैसे होएगा, विल वी एवर गेट टू वेयर वी वांट टू बी, पता नहीं, बहुत अनसर्टनिटी से होती है एंड बहुत अनप्रडिक्टेबल लगता है सब कुछ, एंड होता भी है. तो मेरे टाइम पे भी, मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे हम घर में थे, कोविड था, कुछ नहीं पता लगा था दिन कैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, टेस्ट दे रहे हैं. मेरे तो स्कूल भी बिल्कुल ऐसे करके ऐसे गया है, एंड मैंने मतलब देयर आर मेनी पीपल हु सेड कि अच्छा हाँ ऐसा थोड़ा होता है कि इसके 400 आए थे तो ऐसी बोल रही है. बट व्हेन यू बिन थ्रू दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ दैट फील्स कि नीट से 4 महीने पहले तुम्हारा 400 से स्कोर गिर रहा है, एंड द कॉलेज दैट यू वांट टू गेट टू नीड्स एटलीस्ट 600. तो वो फीलिंग एंड वो जो डर तुम्हें लगता है ना उस पॉइंट पे, वो तुम्हें ही पता है. एंड आई जस्ट वोंट एवर वॉन्ट टू से दैट और ऐसे कि मैं बोल दूँ कि अच्छा मेरा तो इतना स्कोर आया था, मैंने बढ़ाया है, जस्ट टू गेट व्यूज़ और जस्ट टू फूल एनीवन. तो दैट इज जस्ट समथिंग दैट आई नो कि वो फीलिंग कैसी होती है, कितना गंदा लगता है कि पता नहीं क्या होएगा. बट यू रियलाइज विद टाइम कि अच्छी चीज़ों को ना टाइम ही लगता है. Good things will take some time, it will take a lot of effort, it will take a lot of blood, sweat and tears, but they eventually happen. And when you get what you wanted, the happiness that you feel at that moment is unparalleled. So don't stop believing in yourself. So the 12th point is something very simple, and it is be kind. You never know what the other person is going through, what they are experiencing in their life. So I think it is very, very easy to just pass them a smile, or just say thank you, or just talk to them calmly and sweetly and gently, because you just never know कि दूसरे बंदे की लाइफ में चल क्या रहा है, and उनके दिमाग में what the kind of battle that they're fighting, you have no idea about it at times. So I think you should just be kind and be as nice as you can to people around. Learn to let go. People are going to come into your life and people are going to leave it. Some of them are a blessing for you and some of them are just a lesson. And ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है. I know, मतलब there was just a point in my life where I lost a very close friend of mine, and due to whatever reasons, and वो reasons ना तुम्हें बहुत secondary लगता है फिर बाद में. But the first thing that you think is अच्छा, I used to have this person in my life who was so close to me and they just left, and it is a very hard pill to swallow. I know. मेरे लिए अब बोलना बहुत ईजी है कि अच्छा हाँ लेटिंग गो, यू शुड लेट गो ऑफ पीपल हु आर डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस, ये वो बोलना अब ईजी है, एंड इट इज समथिंग दैट आई हैव लर्न टू डू. तो इट इज समथिंग दैट आई फील इज पॉसिबल. बट वंस यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ इट एंड वंस यू आर गोइंग थ्रू इट, तो मुझे लगता है कि नहीं, this is the end of my world, and I'm never going to find a friend like this again, or a person like this ever again. बस अब तुम, it was my fault, maybe there was something wrong to me, वो blame game चलती रहती है. But वही ना, मतलब ये टाइम साथ ही चीज़ तुम्हें रियलाइज होती है कि it is okay to let go. Sometimes there are people who are holding you back from the best version of yourself, and they're just not meant to be in your life. And as simple as it sounds, and as cliche as it sounds also, कि ठीक है यार, कई बार some people are just not meant to be there. So let them go. It will be good for you and for that person as well. 14th point is choose quality over quantity. मेरे लिए in every single aspect, I think it is more important to have one real friend than have 20 fake ones. It is that one friend who will be there for you when you're going through a darkest time, and not those 20 friends who are just there for you when you're happy and during the fun times. Next point is 15th. Take risks. You won't ever know unless you try. तो I think ये चीज़ भी मैंने recently सीखी है कि अच्छा, it's fine to just go for it and take that leap of faith and just do it. तो अगर मैं YouTube चैनल स्टार्ट करने की बात करूँ, I was very apprehensive.
starting में very I was very confused if I should do it or should not do it. But deep in my heart I knew कि हाँ मेरे को I want to help people and I know कैसा लगता है when you're confused and you have no idea about what you have to do, कहाँ से पढ़े कैसे करें. तो I just wanted to share my views with anyone कि एक बंदे की भी help हो जाएगी ना. I know I'll be happy when I'm going to bed at night कि अच्छा हाँ मैंने किसी की help की है. Out there, someone out there is learning or is getting a better understanding of what they want to do because they listen to me. तो हाँ मुझे करना था. तो मेरे को बस ये था कि हाँ यार ठीक है आई टेक दैट रिस्क. मेरे को बहुत डाउट्स है कि व्हाट इफ पीपल जज मी, व्हाट इफ पीपल से कि अच्छा आई एम ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर और लाइक आई डोंट नो आई एम ट्राइंग टू यू नो बी पॉपुलर और जो भी. एंड कि मतलब इफ आई एम कैमरा शाय या मतलब मेरे को लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे को कैसे बात करूँ क्या बोली, एनीथिंग. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माइंड दैट टाइम. तो बट ठीक है मेरे को था कि यार ले लेते रिस्क, देख लेते हैं. आई वोंट नो अनलेस आई ट्राई. ओके सो नेक्स्ट इज 16th. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम शोइंग अप. कई बार हम डर के बैठ जाते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दैट पीपल विल बी देयर और आई शुडंट परफॉर्म कि ये सारी ऑडियंस मेरे को दिखेगी एंड दे माइट जज मी, ऐसे वैसे जो भी थॉट्स होते हैं. बट नहीं, शो अप, गेट ऑन दैट स्टेज, गो टू दैट पार्टी. दैट इज हाउ यू विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. 17th इज कर्मा इज रियल. ठीक है, व्हाट गोज अराउंड डज कम अराउंड. हाँ दिस इज समथिंग जो मैंने सीखी एक्सपीरियंस के साथ ही कि यार कभी कभी लगता है बहुत अनफेयर हो गया हमारे साथ, क्या करे क्या हुआ. बट जैसा कोई करता है ना उसके साथ वैसा हो जाता है. तो आई एम गोइंग टू एंड दिस ईयर कि हाँ कर्मा इज वेरी रियल एंड आई जस्ट बिलीव इन इट अ लॉट. ओके 18th पॉइंट इज योर पेरेंट्स आर्ट ऑलवेज रॉन्ग. एंड आई नो मेजॉरिटी लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं दे विल प्रॉब्ली बी टीनेजर्स. एंड ये चीज़ मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है ड्यूरिंग माई टीनेज ईयर्स कि मतलब मेरे को लगता था बस मैं एक साइड पे हूँ एंड मेरे पेरेंट्स एक साइड पे है एंड देयर जस्ट अगेंस्ट मी. मेरे को यहाँ नहीं जान देना, वहाँ नहीं जान देना, मेरे को ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना. मेरे फ्रेंड्स से प्रॉब्लम, मुझसे प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है. दे जस्ट अगेंस्ट मी एंड दे जस्ट डोंट लाइक मी एंड बस इनको मेरी खुशी से प्रॉब्लम है. लगता है सबको लगता है. बट एज यू ग्रो अप यू रियलाइज कि दे आर्ट ऑलवेज रॉन्ग. दे आर सेइंग समथिंग फॉर योर वेल बीइंग ओनली एंड आई थिंक नो वन हैज गॉट योर बैक लाइक योर फैमिली हैज़. एंड ये चीज़ तुम बात हुए टाइम बाद ही रियलाइज करते हो. आई एम नॉट गोइंग टू से कि अच्छा हाँ आई डोंट एक्सपेक्ट एनी वन टू अंडरस्टैंड और गेट और अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ. बट हाँ एज आई ग्रोन अप दैट इज समथिंग दैट आई रियलाइज कि ठीक है यार दे आर्ट ऑलवेज रॉन्ग एंड वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे होते हैं. टाइम हील्स एवरीथिंग. आई नो ये बहुत हार्ड टू बिलीव लगता है व्हेन यू गोइंग थ्रू समथिंग. लगता है कि मेरा यू नो दुख दर्द बिल्कुल भी एंड नहीं होने वाला है कभी. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई पेन, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. तुझे क्या पता. इट्स वेरी इजी टू से कि अच्छा हाँ क्लिशे लाइन है, बहुत ईजी सिंपल सी चीज़ें बोलना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, कुछ नहीं होता. बट ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि उस पॉइंट पे जितना भी तुम्हें लगे ना कि क्यों हुआ मेरे साथ, आई एम ब्रोकन एंड आई कैन नेवर हील एंड व्हाई डिड आई गो थ्रू दैट. टाइम के साथ द पेन गोज अवे. इट डज. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई जस्ट थिंक दैट आई एम अ लिविंग टेस्टमेंट टू दैट थिंग कि हाँ यार मेरे को लगता है कि मेरे लिए कि कुछ कोई भी चीज़ मेरे को अभी बॉदर कर रही है ना, अभी मेरे को हर्ट कर रही है, विद टाइम इट विल हील, इट विल गो, दैट पेन विल गो अवे एंड आई विल मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग. तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू इट कि अच्छा हाँ मेरे को लगता था कि एक पॉइंट पे कि अच्छा हाँ आई एम गोइंग टू स्टे अ सैड पर्सन और आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, आई एम गोइंग टू ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ, नो वन गोइंग टू बी माई फ्रेंड एंड दिस पर्सन डिड एक्स वाई दैट थिंग टू मी एंड आई एम गोइंग टू बी हर्ट ऑलवेज, आई एम ब्रोकन, ऐसे वैसे. बट आई थिंक नथिंग कैन एवर बी इरिपेयरेबली ब्रोकन एंड दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई पर्सनली बिलीव कि टाइम साथ सब कुछ ठीक हो जाता. कैन से इट विद कॉन्फिडेंस दैट आई एम very grateful for my life and I love my life and ठीक है I am thankful for the ups and downs that I went through. All the downs taught me a lot of things and all the ups made me appreciate them even more when I had them after the lows. तो I think कभी कभी वो ना साइन कर्व चलती है लाइफ, तो कई बार it is very important to hit the rock bottom as well so that you can appreciate that high when you get to that point. So I am just very grateful for all the people who've been in my life, who've always helped me, for all my friends who've stuck by my side and I don't have any regrets as such. ठीक है, everything that happened and eventually I have reached a point where I know कि अच्छा हाँ everything did happen for a reason and
the universe just has my back. Okay, so that was pretty much everything that I've learned, and the main things that I wanted to mention in the video, and the things that have really helped me become the person that I am today. And I just want to take a moment and thank God for gifting me with another year of life. This is it for today. That is all the points that I wanted to mention, and I hope no one takes offense to any of these points. And okay, even if you don't align with it, just know that this is just what my opinion is, and it is completely based on the experiences that I've had. I'll be making a video on you getting to know me as well very soon. So make sure that you post your questions in the comment section, and I'll post that video as soon as I get enough questions to answer. So I hope you liked the video, and I hope you took something away from it, and I'll see you in the next video.